So Poisson distribution is another discrete probability distribution which caters the discrete variables, but those variables which are distributed in any unit of time and space. For example, the number of people per area, the number of defects in 1 meter piece of cloth. For example, number of mistakes per page, right? Number of spots in a per card, right? So discrete probability distribution basically is referring to those variables which are discrete but which are not binomial and which are distributed over time and space, right? So this is useful when mostly n is large, because if you're talking about binomial distribution, I have told you that you can take the help of table as well, but when you look at the table, so table में जो n की वैल्यू है वो 25 या 30 से ज़्यादा मोस्टली टेबल्स में नहीं होती, क्योंकि वही टेबल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उस सूरत में आपको दोबारा से या तो इक्वेशन से कैलकुलेट करें आप, right? Or sometimes the situations are complicated, so you cannot calculate it with the binomial situations. या binomial equation से कैलकुलेट करना बड़ा ही लेबोरियस हो जाता है। तो इस सूरत में फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली जा सकती है when n is large and the probability is small, and when the independent variables they occur over a period of time, right? Why this is called as Poisson distribution? Because of the mathematicians who drive the equation of this Poisson distribution. So it's one of the most widely used probability distribution. Some of the other examples are given. You can see that number of plants growing per acre. Definitely now number of plants growing per acre and number of plants growing per spot, or the number of defects in a given length of a videotape. So it's one of the most extensively used probability distribution in biology and medicine. Now, because every distribution has some equation behind it, and likewise, Poisson distribution also have this equation on which it works. This is x, it's the success, and lambda is the average basically. So for calculating the Poisson distribution, what you just need an average of any discrete variable, right? Or you just need to know the mean number of the occurrence per unit, time, volume, and area, right? So if you look at the table, if you look at this equation, x is again the number of success, e is the constant, which is equivalent to the value of 2.7183, and lambda is the average, and x is against the success. So here's an example. For example, if you have 200 typographical errors which are distributed in a book, or you can say a manuscript which is comprising of 500 page manuscript. So what is the probability that a given page contains exactly 3 errors? So in this situation, what you just need to do, according to this information given, you can simply calculate the mean at first, right? And then you can calculate the probability, because in the formula you just need what? You just need the average of the values, right? So first you need to find out the mean number or the lambda number of errors, and there are 200 errors distributed over 500 pages. So simply on average each page will contain 0.4
errors. Average, now you can easily calculate the chance that on any randomly chosen page will have exactly 3 errors, right? So how would you calculate it? Simply, you know that the x is 3, the total number of success. What you just need to do, this is the fixed value. Value of e is constant. ठीक है? In place of lambda, you will place the value of average, and again on the place of lambda you will add the value of average, and x is again 3, and in denominator this is x factorial, so it's 3. So in total, this is the formula. You have put values and then you can calculate it, and it's 0.0072. So there is less than 1% chance that any given page will contain exactly 3 errors. ठीक है। अच्छा, इसी तरह जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन होता है और उसके साथ टेबल होता है, इसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है और उसका टेबल है। तो वंस यू नो द एवरेज, यू नो द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये इसके दो ही सेगमेंट्स हैं। ठीक है, वर्टिकली एक्स की वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हॉरिजॉन्टली एवरेज की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो अब हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो एवरेज था वो 0.4 था और जो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस था वो 3 था। So we'll match both the columns, 3 from here, 4 from here. So table will also demonstrate you this value, the same value which is calculated from the equation. So you can calculate it with the equation and you can calculate it with the table as well. Okay, but the use of table is more convenient comparative to calculating the values of probabilities through equations. अगर ये जो table है ये it's entirely derived from the equation. ठीक है, ये इसीलिए सेम आंसर्स दे रहे हैं। So now you have this exercise question. अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक और जो है वो एप्लीकेशन है, वो ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं। किस सूरत में? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, आपको याद होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया वो कैसे कैलकुलेट होगा, n इंटू पी। तो n इंटू पी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब है आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं। तो जब n इंटू पी इज लेस देन 5, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट्स लेस देन 5 हो, तो उस सूरत में या n इंटू क्यू जो है वो भी जो है वो लेस देन 5 हो, तो उस सूरत में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज इन अल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम आंसर्स दे रही होती, बट कंडीशन ये है कि जो ये एवरेज है वो लेस देन 5 हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या जो एवरेज है वो लेस देन 5। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि लेफ्ट हैंडेड पीपल। अब लोगों का लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होना ये बिल्कुल ही एक बाइनोमियल सा बाइनोमियल वेरिएबल है। ठीक है, पर्सन या तो लेफ्ट हैंडेड होगा या वो राइट हैंडेड होगा। ठीक है, तो आपको सवाल दिया हुआ है कि 200 लोगों का जो रूम है उसमें 200 लोग मौजूद हैं और अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पीपल इन अ रूम दे आर लेफ्ट हैंडेड, राइट। 2% जो है ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, right? Find the probability that exactly 5 people there are left-handed. अब इस सवाल में 5 people are exactly 5 people are left-handed, इसको आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर जब आप दोनों से करेंगे तो यू विल बी
amazed to know कि जो answer है वो approximately same है. So as you can see, when you apply Poisson distribution, so the average, first average was calculated by n into p. ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया है? नंबर ऑफ ट्रायल्स 200 and probability is 0.02, so the average is 4, right? So as per formula, x, the value of x is 5, and you can see that you got this answer. But when the same thing is verified by this binomial formula, so you get this value which is mostly similar, more or less similar. ठीक है, so ये जो difference आ रहा है between the two answers is based on the fact that Poisson distribution is an approximation and rounding has been used. So you can use binomial distribution. Uh, you can use Poisson distribution instead of binomial distribution when this product is less than 5. और इस तरह से भी कह सकते हैं आप जब इनमें से एक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, एक वैल्यू बहुत कम हो, यानी n जो है वो लार्ज हो. ठीक है, दिस वन इज टू लार्ज एंड दिस वन इज टू स्मॉल. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो बहुत ज्यादा हों, तो उस सूरत में भी जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो इट शुड बी लेस देन 5, और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल. So this is the uniqueness of this distribution, that once you know the average, its mean and its variance, they are equal, right? You don't need to calculate it. Once you know the average, you know its variance, and again you know its deviation.